So recently I've moved houses and I need this room to be my new home studio. ये studio setup करने में पहला step है setting up my computer desk. Like any other project, मेरी कुछ requirements हैं जो इस desk को पूरा करनी होगी. Number 1, 2 monitor screens की जगह, since I am videographer and I'm always editing videos, I need 2 screens. Number 2, to keep and store my stuff. Number 3, कुशादा workspace. क्योंकि मैं क्रिएटिव हूँ, so I do a lot of other stuff as well. जैसे कि calligraphy. मुझे space require होती है to do all of this creative stuff. And number 4, to use it as a potential podcast studio. अब्दुल्ला यहाँ नहीं करनी यार, sitting room है. Sorry. गोल्स तो रख लिए हैं तुमने, मगर लुक्स का क्या? आखिर वो भी तो मायने रखती हैं। तो लुक्स के लिए कर रहा हूँ ना मैं रिसर्च. पट्टी यही. Now based on this research, काम शुरू करते हैं. So first step है the Alex drawers. They need to go roughly here. इनको थोड़ा सा move around करेंगे. And then the next step then will be to set up the tabletop on top of this and then move from there. So next up we have the tabletop. थोड़ा सा गंदा हुआ है, इसको साफ करना पड़ेगा. लेकिन this is what we're doing next. Okay, so the next step is इसके ऊपर हमें लगाना है monitor arms ताकि उसके ऊपर monitor लादे जा सके. उर्दू. Okay, so this is the monitor arm that I have. इसका एक बाजू लंबा है और एक छोटा है. It's funny. Now ध्यान में ये बात रखनी है कि ये जो छोटा आर्म है इसके ऊपर बड़ा monitor आएगा, right? Because it's a wide monitor. और जब वो आएगा तो इसके पास जगह कम होगी. That's why it has such a long arm, क्योंकि it's gonna come out or from behind the big monitor. So वो चीज़ हमने थोड़ी सी देखनी है. But let's do this. उस तक भी पहुँचेंगे. Now here is another stand that I had on my table in addition to the one I have on for the monitors. What this does is basically it acts as a extension to put my camera on for video calls or streaming or whatever, or in case इसके ऊपर light भी लग जाती है. So it works, you know, as a separate arm if you need. इस yellow depressing light से मैं तंग आ चुका हूँ. So I'm just gonna turn on this big light instead. Much better. अगर आप पाकिस्तानी हैं और अगर आप सऊदीया में भी रहे हुए हैं तो आप मेरा दर्द समझ सकते हैं. White lights are the best. Okay, so successfully we have taken off the arm. अब इस जनाब को इसके ऊपर लगाना है. यहाँ पे मेरे पास ये एक ब्रैकेट बनी हुई है which I've already put on there. अब ये जो चीज़ें हैं they're just gonna slide in there. Now that we have the monitor set up, it's time for our main PC. Now that we have the main mota stuff up, bada monitor, chota monitor and the PC, now it's time for us to do the wiring. So this is my new workspace. इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जिनकी मुझे ज़रूरत थी. It has the functionality, it has the space, and it has the style that I wanted. तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो वीडियो के शुरू में मैंने मेंशन की थी. And this is not a final setup. Of course, as we move forward, इसके अंदर मैं चीज़ें ऐड करूँगा, इसमें से चीज़ें रिमूव करूँगा. It may not look like the same few months down the line. So अगर आप देखना चाहते हैं कि what it looks like, you want to see that progress, that change, so stay tuned, subscribe to the channel.
और लाइक करें, बिकॉज इफ़ यू डोंट लाइक आई वुड नो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यू नो. एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको पुश नोटिफिकेशंस आएँ दैट अब्दुल्ला ने नया कंटेंट बनाया. सो गो चेक इट आउट. ओके, other than that, I thank you so much for watching this video and I will see you in the next video.